Students, today we will discuss about our new topic classification of migration, that means types of migration in this video in detail in simple language. So continue watch this video. Students, today we will discuss about the types of migration in this video in detail. So continue watch this video. First of all, types of migration. First main type, place based classification, and the subtype is internal migration. Second, international migration. The second main type, region based classification. In the first subtype, pull factors, migration due to attraction, and second is push factors, migration due to compulsions. Okay, first, place based classification. Any migration which is based on geographical boundaries of a country is divided into first internal migration and second international migration. A migration between the two states, that means between the boundary of country, within the country, that is internal migration. And the second thing, international migration, migration which will held between two countries, that means beyond the boundary, country के बाहर, that is international migration. First, internal migration, the movement of a person from one place to another place within the geographical boundary of a country, यानी country के अंदर ही हो रहा है, that means internal migration. When a person from Gujarat settles in another state or a city, or when a person from any other state or a city settles in Gujarat, that is internal migration within the boundary. Now we will discuss about international migration. Movement of a person from one country to another country is known as international migration. Like example, Gujarat or from any other part of India, if a person moves to some other country in search of job, occupation, business, for better standard of living, for permanent settlement, or when people from other countries come to India for settlement on a permanent basis, that is international migration. That means beyond the boundary. ओके, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में परमानेंट सेटल होना, फॉर जॉब, फॉर ऑक्यूपेशन, फॉर बिजनेस, दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन. ओके, सो दीज आर टू मेन थिंग्स, द मेन टू टाइप्स, प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन. सेकेंड टाइप, रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन्स फॉर माइग्रेशन. फर्स्ट, माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर्स. सेकेंड, माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी कि अट्रैक्ट होना. और सेकंड है माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर्स, कंपल्सरी, यानी आपको पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है. और ऐसे माइग्रेशन होते हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल. फर्स्ट, माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर्स. व्हेन अ पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टू द लाइफ स्टाइल एंड modern infrastructural facilities for urban areas and migrates there is known as migration due to pull factors. यानी कि वहाँ की लाइफस्टाइल, जीवन धोरण, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ की सारी अच्छी चीज़ें, वो देखकर एक व्यक्ति अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है और माइग्रेशन करता है. दैट इज़ पुल फैक्टर्स. लाइक द माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू अ सिटी can be considered as migration due to pull factors because compared to villages, better lifestyle, transportation, communication system, education, health services etc. Obviously villages में ये सब फैसिलिटी नहीं मिलती. अपने बच्चे को पढ़ाना है, एजुकेशन ओके अच्छा देना है, क्वालिटी वाला, सिटी में जाओ. हेल्थ सर्विसेज अच्छी लेनी है, सिटी में जाओ. कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क भी नहीं है विलेजेस के अंदर, तो वहाँ पर आपको फुल फैसिलिटी 3G 4G 5G मिल जाएगी. ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन, रोड भी नहीं है, कच्चा रोड है, राइट. और सिटी में जाओ, पक्का रोड मिलेगा, गार्डन मिलेंगे, मल्टीप्लेक्स मिलेंगे, होटल्स, रेस्टोरेंट, एनीथिंग. तो लाइफस्टाइल बेटर कहाँ की है, सिटी की. तो ये देखकर जो माइग्रेशन होता है, दैट इज़ योर पुल फैक्टर्स. In the same way, for the same type of attraction in the other countries, when people migrate to other countries and settle for permanently, it is known as migration due to pull factors. इसी तरह किसी कंट्री के अंदर ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लाइक ओके कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, और जो एक कंट्री के अंदर से दूसरी कंट्री में अट्रैक्ट होकर जा रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो पुल फैक्टर्स. बट इंटरनेशनल माइग्रेशंस. सेकेंड, माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर्स, कंपल्सरी माइग्रेशन करना पड़ता है. कुछ ऐसे रीज़न भी है. When people living in villages are forced to leave their villages due to lack of business or occupational opportunities,
or when there are some limited educational facilities and when they are forcibly pushed in cities, it is known as forcible migration or migration due to push factors. कंपलसरी माइग्रेशन करना पड़ता है, जैसे कि उस विलेज के अंदर क्या नहीं है, तो लैक ऑफ बिजनेस ऑक्यूपेशन, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, ऑक्यूपेशन आपके जो व्यवसाय है वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, लिमिटेड एजुकेशनल सिस्टम, फैसिलिटी एजुकेशन की भी नहीं है, ओके। तो फोर्सिबल आपको कंपलसरी माइग्रेशन करना पड़ता है, इसीलिए इसको फोर्सिबल माइग्रेशन भी बोलते हैं। इन अदर वर्ड माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर्स। कुछ रीज़न दिए हुए हैं, उस रीज़न को आप समझ जाओगे। फर्स्ट, इन अट्रैक्शन बेस्ड माइग्रेशन इकोनॉमिकली वेल ऑफ विलेजर्स मूव टू सिटीज़ फॉर बेटर लाइफ स्टाइल एंड द डिसीजन इज़ वॉलंटरी। ऑब्वियसली आपको लाइफ स्टाइल बेटर करनी है तो आपको पुल फैक्टर अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट होने के बाद आप माइग्रेशन करोगे, ये वॉलंटरी है। कोई करता है अट्रैक्ट होकर, कोई नहीं भी करता, कंपलसरी नहीं है। सेकंड, बी, if the migration is based on lack of facilities to improvement economic standards or economic opportunities economic variable groups, it can be said that forcible, forcefully आपको माइग्रेशन करना पड़ता है due to lack of facilities, that is push factors, right? यानी यहाँ पर ये कंपलसरी माइग्रेशन है, आपको करना पड़ता है। तो ये आपके टाइप्स है। We will discuss about causes in our next video, so continue watch this video.